हाय गाइस, वेलकम बैक टू जस्ट रिलैक्स चैनल। और आज हम बात करेंगे करनाला बर्ड सेंचुरी के हमारे एक्सपीरियंस के बारे में। बेसिकली मैं आपको ये बता दूं कि हमारा बिल्कुल भी प्लान नहीं था वहाँ जाने का। इवन बिफोर आई स्टार्ट हम अलीबाग जा रहे थे, और ऑन द वे जब हम मुंबई से पनवेल पहुँचे, विच टुक अस ऑलमोस्ट लाइक 2 आवर्स, तो हमारे ड्राइवर ने कहा कि यहाँ पर करनाला बर्ड सेंचुरी एक बहुत फेमस जगह है। तो हमने कहा कि ठीक है, अभी टाइम है हमारे पास काफ़ी, तो हम उधर चले गए। वहाँ हम मॉर्निंग अराउंड 9:30 के आसपास पहुँचे। बाहर टिकट रूम से हमने टिकट्स ले ली। वहाँ पर उन्होंने बोर्ड लगाया हुआ था जिसके अंदर काफ़ी डिटेल्स दी हुई थी रिगार्डिंग द बर्ड सेंचुरी, द फॉरेस्ट एरिया, एंड सम मोर डिटेल्स अबाउट द सेफ्टी मेजर्स एंड अदर स्टफ। एंड वंस यू एंटर दिस प्लेस फ्रॉम द मेन एंट्रेंस, बहुत ही अमेजिंग सीन मिलता है बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ ग्रीनरी अराउंड. You feel really like you are someplace where you must be, because काफ़ी ऑक्सीजन मिलती है, काफ़ी सूदिंग होता है आइज़ के लिए, एंड द सीन इज़ रियली ब्यूटिफुल. उसके आगे जब हम थोड़ा चले तो टूवर्ड्स आवर लेफ्ट वी फाउंड अ स्विंग एरिया. इस स्विंग एरिया के अंदर बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया, हमने भी कुछ टाइम स्पेंड किया वहाँ पर. उसके बाद बर्ड सेंचुरी से निकल के हम जब आगे आए तो वहाँ एक कैंटीन एरिया है. एंड गाइस, वर्ड ऑफ कॉशन, ये इकलौता एक जगह है यहाँ पर जहाँ आपको कुछ खाने का सामान मिलेगा, बिकॉज आफ्टर दिस वंस यू स्टार्ट ट्रैकिंग आपको कुछ नहीं मिलने वाला. सो प्लीज़ मेक श्योर इफ़ यू नीड एनीथिंग, सो यू कैन गेट इट फ्रॉम दिस प्लेस ओनली. उसके बाद हम ट्रैक एरिया की तरफ निकल पड़े. एंड बिगनिंग जो रूट है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, एंड द रोड इज़ गुड, द एरिया इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड. बट as you start the trek and as you move forward and move up the hill, जो एरिया है it just gets worse and worse. बहुत टफ होने लग जाता है. कहते हैं बिगनर फ्रेंडली, बट इवन इफ यू आर अ बिगनर एंड यू गोइंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, you will not feel really good. But at the same time, if you love trekking, I'm sure you're used to it. So हम जब ऊपर की तरफ गए, so in somewhere around midway, मेरी younger daughter was not feeling so well, so I had to come back with her. And जो आगे की जर्नी है वो मेरी वाइफ और मेरी एल्डर डॉटर ने कंप्लीट की. एंड अब वो कैसे रास्तों से गए और क्या क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया, मैं अब आपको इन क्लिप्स के थ्रू दिखाता हूँ.
ऑन द वे उन्हें एक टेम्पल भी मिला जिस विच वॉज सराउंडेड बाय सम मंकीज आउट देयर, तो वो टेम्पल उन्होंने देखा। उसके बाद द इन्वायरमेंट वॉज ब्यूटिफुल, द सीन वॉज रियली अमेजिंग। और ये हर ट्रैक में होता है, एज यू मूव अप द हिल and you're getting closer to the nature, the scene becomes really eye popping, and you always love it, and वही चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिली। एंड दे टुक ऑलमोस्ट लाइक 2 hours, 2 घंटे लगे उन्हें ऊपर तक पहुँचने में। एंड वहाँ जाके ऊपर बेसिकली आपको एक वाटर टैंक मिलता है जिसमें which automatically gets filled up all the time with the rain water, और ये as is है जैसा पहले बना हुआ है। Basically in ancient times when kings were using this place, they were actually getting water in that way, and काफ़ी लोग वहाँ से वाटर बॉटल्स अपनी रिफिल भी कर लेते हैं वंस दे रीच ऑन द टॉप एंड दे आर आउट ऑफ वाटर। वहाँ से द व्यू वाज रियली अमेजिंग फ्रॉम द टॉप एरिया ऑफ द फोर्ट। दे स्टार्टेड कमिंग डाउन ASAP एज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वी वर एक्चुअली मूविंग टू अलीबाग, सो उन्होंने डिसेंट था वो इमीडिएटली शुरू कर लिया था। दे टुक अराउंड 1.5 hours टू कम डाउन। ओवरऑल अप्रॉक्स 4 hours के अंदर यू कैन एक्चुअली कंप्लीट दिस जर्नी। एंड बट देयर सर्टन टिप्स जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप करनाला बर्ड सेंचुरी या किसी भी ट्रैक पे जा रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू टेक केयर ऑफ ऑल दीज टिप्स। एक तो आपका एक प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए, एंड शूज़ आपके ट्रैक के लिए पूरा कंड्यूसिव होने चाहिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन पर पर्सन अप्रॉक्स 3 to 4 लीटर वाटर का आपका अरेंजमेंट होना चाहिए। फ्रूट्स एंड you should have some toffees with you, which actually helps you keep you away from the dehydration issues. And the other things that you must take care of while you're trekking is keep the forest clean. Don't throw away your plastic bottles or any other plastic material. Karnala Bird Sanctuary mein they even fine you if you're doing this. One bit of advice I would say is go in groups. Groups में जाने से एक तो motivation मिलता है, रास्ते में बातें करते हो आप ऊपर पहुंच जाते हो, and you also feel safe. So keep these tips with you guys, and if you really want to have a beginner friendly trek experience, then you can definitely go and check out Karnala Bird Sanctuary. So wish you all the luck, and please let us know in the comment how was your experience for Karnala Bird Sanctuary. And if you're coming to this channel for the first time, please do subscribe the channel and hit the bell icon so that whenever we go somewhere and we upload any videos, you get the notification and you can actually check out those videos.